Agriculture, Chapter 4. When we say agriculture, it means agriculture is an age old economic activity in our country, and in India there are three types of farming that is known as primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and commercial farming. Primitive subsistence farming is also known as slash and burn agriculture or farming, and it is practiced on a small patch of land with the use of primitive tools. Intensive subsistence farming is practiced in a highly populated area and use of high dose of biochemical inputs. Commercial farming, as the name suggests, it is used for commercial purpose and where use of high and modern inputs are there. HYV seeds are used, chemical fertilizers, insecticides, and pesticides are used to obtain higher productivity. There are three cropping patterns in India which is totally dependent upon monsoon, यानी monsoon पर आधारित है. That is Kharif crop, Rabi crop, and Zaid crop. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September to October. In between Rabi and the Kharif seasons, there is a short season during summer months, and it is known as Zaid season or Zaid cropping pattern. Zaids are the crops which are produced under this season are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, and fodder crops. As we have seen that agriculture is the backbone of Indian economy, more than 50% of the population is engaged in this activity. तो फिर जीडीपी में तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. बट एज द इकोनॉमिक सर्वे in 2014 and 15 has suggested that there is a declining trend in the contribution of agriculture in GDP. What is GDP? Gross domestic production. In 2013 and 14, agricultural contribution was 4.2 in GDP, and in 2014 and 15, the contribution of agriculture was 0.2. And in 2015 and 16, the contribution of agriculture was 1.1. So there is an alarming indication कि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ 60% लगभग लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा आउटपुट जीडीपी में कम है. तो ऐसा क्या है, क्यों है? व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन एग्रीकल्चर? तो कमी कहाँ है? नंबर ए, हम उस स्पीड से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस स्पीड में डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं. आज भी हमारी एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है, इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए. फार्मर्स जो हमारी कंट्री में हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मीन्स नेचुरल, जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसी पर डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% of its population needs some serious technical and institutional reforms. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए जो है शुरू से ही इस बात पर ध्यान दिया कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट किया जाए. दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैड मेन फोकस ड्यूरिंग 5-year प्लान, जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप की गई, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया, लैंड होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश की गई. बट दिस वॉज नॉट सफिशिएंट. तो फिर 1960s और 70s में ग्रीन रिवोल्यूशन,
को अडॉप्ट किया गया. यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी वॉज देयर. देन वाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फूड वॉज देयर. इसने काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट किया. लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि इंडिया की एग्रीकल्चर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, उतना पेस के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है. दैट इज़ वाई, क्योंकि इंडिया का जो क्रॉप है कई बार बहुत सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, लाइक ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, इनकी वजह से ख़राब हो जाती है. कई बार फार्मर्स जो हैं सुसाइड भी कर लेते हैं जब उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती है. इन सब को दूर करने के लिए, इन सब को अबॉलिश करने के लिए, इन पे ऊपर ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड ग्रामीण बैंक्स, cooperative societies, banks for providing loan facilities to the farmers at lower level, and issue of Kisan Credit Card (KCC) and personal accident insurance scheme was initiated. Weather bulletins has been established and broadcasted. फिर HY high yielding variety of seeds were also introduced. इसके साथ साथ establishment of Indian Council of Agricultural Research Institute and agricultural universities established की गई. Veterinary services यानी कि पशुओं की देखभाल की गई. Animal breeding centers have been developed. Horticultural development and research centers have been developed, as well as development in the field of meteorological and weather forecast department, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है इसमें विकास हो रहा है. इसके साथ साथ किसानों को सहायता देने के लिए एंड टू एस्टैब्लिश अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स on the basis of two strategies. That is, there are two components of the food security system in India, that is buffer stock, and PDS system, that is public distribution system. और किसानों को कैसे सहायता करते हैं, तो आज हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे.